हाय। हेलो। नमस्ते। मेरा नाम है द्वैपान रॉय चौधरी और आज के इस लाइव सेशन में हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं आरबीआई प्रीलिम्स लेवल का एक मेमोरी बेस्ड टेस्ट। तो ये टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसका लिंक मैंने पहले से ही डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्लोज टेस्ट है तो इसको स्किप करेंगे अभी। सो बी और डी में चेंज होगा। नेक्स्ट इज हैविंग हैविंग नेवर हेल्ड अ स्नेक। ओके। Dash snake before was very timid. All right. So C and B. Although she acts spending तो नहीं होगा, acts uninterested होगा. So C and B. My best friend Angela has an uncanny ability to know my thoughts before I speak. So B and D. Two teams were vandalism. कोई सेंस नहीं होता. Two teams were charged with vandalism. So A and B. After the spray painted curse. Okay. द ओके, तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कौन से पार्ट में एरर है. द लॉ फैकल्टी डीन सेड द एग्जामिनेशन was like to be conducted was likely to be conducted होगा. So this one, I am one of a number of I am one of a number of citizens one of a number of citizens. अगर यहाँ पे सिटीजन्स रहता तो मैं वन ऑफ अ सिटीजन्स डायरेक्ट देता, लेकिन वन ऑफ अ नंबर ऑफ सिटीजन्स होगा. सो पार्ट बी में एरर है. शी we shook we shook myself dry on the porch and returned to the warmth of the cabin. We shook ourselves होगा. So this part, because of a major breakthrough in technology, people in areas with little water or land can grow crops in urban gardens. Little less water. लिटिल क्या वाटर के साथ जाता है? लिटिल वाटर. ओके, बाद में देखेंगे इसको. द यूएस, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज एन कंट्री. सो अभी PQRS चीफ 5 है. लिंग्विस्टिक chauvinism now. All right, the mass disappearance of language and cultures is a powerful force contributing to, okay, an extinction event with fundamental and incalculable political ramification, modernized and globalized. Okay. PTR, okay, globalized, the mass disappearance of language cultures. अभी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बाद में देखेंगे. I was on a tech podcast, okay, discussing Google's decision to remove links from remove links to revenge porn from its search results when victims request. So R से end होगा.
I was on a tech podcast discussing Google to remove. Okay, search result. All right. The Indian newsroom and equal for women, or it will lose all credibility. Okay, Indian newsroom must be made safe. So AD, फिर B, फिर E. No, no, no. ADB, फिर C, फिर E, or lose all credibility. All right. Okay. India was only the death rate in India was only 15 million per population. So CED, whereas the rate in other places was much higher. All right. Made it possible to know confirming a growing number of cases. The increase in the number of cases made it possible to confirm a growing present testing capability had present testing capability had made it possible to. So EA एक पेयर होगा EA. The increase in the present testing capacity had made it possible to confirm a growing number of cases. सही है. Okay. They swore an oath of fidelity to their king. Some intrepid individuals were still in deep contemplate, prepared to make the journey. He spent many hours prepared to make the journey. तो C के साथ तो कुछ नहीं होगा. A के साथ E. ओके. B के साथ F. Fidelity. Emotional states tend to have motivational properties. All right, for the longest period of time. So A के साथ E ही हो सकता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नहीं होगा कुछ. And aeon is a term in earth science for the longest period of time. हो सकता है. B, D नहीं है. C, a rock is a naturally occurring solid. CF. Okay. Once upon a time, in a quaint village by the sea, there lived a young girl, Lily. Okay. She had a deep love for the dash and spent her days exploring the sandy shores for the ocean. One stormy night, a dash near the village, Lily rushed to the beach. One stormy night, a dash near the village. Filled with dash for anyone who might be in danger. With sadness, concern. Filled with concern ही होगा ना. Filled with concern, sadness. कंसर्न ही होगा शायद यहाँ पे तो.
She found a dash sailor clinging, injured sailor clinging to the victor. Okay. Actually, बहुत close words है. Exhausted, drenched. भीगा हुआ drenched का मतलब होता है शायद. इंज्योर्ड ही होगा शायद यार. E. Okay. In gratitude, he offered her a small weathered dash that he had salvaged from the wreck. Weathered. ओके. यहाँ पे नेकलेस की बारे में बात हुई है. सो नेकलेस होगा. ओके. Wearing it as a reminder of their dash, their friendship. Lily decided to become a dash to save. Let's see. Lifeguard. Alright. Concern का synonym. Worry. Peculiar का antonym. Ordinary वगैरह कुछ. All except two. Common, familiar. हाँ. All except two. Okay, so Suresh and Ramesh were two brothers who lived in a small village surrounded by lush green fields. They were known for their peculiar profession, bamboo farming. The brothers had inherited their father's vast bamboo plantation and had been tending to tending to it diligently for years. However, lately there was a growing concern among the villagers regarding the strange occurrence happening in the bamboo farm. One sunny morning, Suresh and Ramesh set out to inspect their beloved plantation. As they ventured deeper into the dense forest of bamboo shoots, they couldn't shake off the feeling that something was amiss. The bamboo stalks seemed unusually tall and thicker than usual. Moreover, peculiar markings adorned some of the stalks, resembling mysterious symbols. Concerned, they exchanged worried glances, wondering what could have caused this transformation. Days turned into weeks, and the bamboo farm continued to bewilder Suresh and Ramesh. One moonlit night, unable to contain their curiosity any longer, the brothers decided to investigate further. Armed with flashlights and their courage, they cautiously explored the depth of the bamboo plantation. As they delved deeper, they stumbled upon an ancient-looking shrine nestled nestled amidst the towering bamboo shoots. It was adorned with offerings and had an aura of mystical energy around it. Their concern grew, but their curiosity won, and they stepped closer to investigate this peculiar. Okay, little did they know that shrine was dedicated for a long forgotten deity believed to bring prosperity and blessing to those who honored it. The peculiar marking on the bamboo stalks were an ancient script communicating a message to the brothers. As they deciphered the message, their concern transformed into excitement and awe. The deity was pleased with their devotion to the bamboo farms and had chosen to bless their plantation abundantly. From that from that day forward, Suresh and Ramesh continued their bamboo farming with renewed vigor and gratitude. The villagers soon witnessed a remarkable transformation in the plantation, with bamboo shoots growing taller, stronger, and more plentiful than ever before. The peculiar happening turned out to be a blessing in disguise, and the brothers' concern gave away gave way to a deeper sense of fulfillment and prosperity, all thanks to their unwavering dedication and their encounter with the mystical shrine. All right, why did Suresh and Ramesh discover their in their bamboo farm? It caused transform. Okay, shrine hidden. All right, mysterious marking, a new species, secret treasure. All right.
What did Suresh and Ramesh stumble upon during their exploration of the bamboo plantation that changed their perspective, a forgotten blessing, a hidden pathway, peculiar marking, perspective? Abundant means in excess, sparingly, scarcely, antonym. Lavishly, profusely. So this and this because of less water, little, little, and technology. Less water and land, less little. मगर मतलब लिटिल क्यों नहीं हो सकता वही मैं सोच रहा हूँ. लिटिल लिटिल अमाउंट बोलना पड़ता शायद. लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर और लैंड, फिर लेस वाटर. टी टी पी टी आर क्यू एस पी टी आर क्यू एस एस. मतलब आर से तो खत्म होगा नहीं, ये दोनों आंसर नहीं होंगे. कल्चर्स के बाद कॉमा लगा है. टी से खत्म, मॉडर्नाइज्ड, ग्लोबलाइज्ड एंड एक्सटेंशन कोई मतलब नहीं बन रहा सेकंड ऑप्शन का. सो फर्स्ट वन. ऑलराइट, सो ये कितना हो जाएगा? 60 मतलब 60 मतलब 5 प्लस 25 टाइम्स 5 130. ऑलराइट, 3% of 2 is 0.06. सो ये कितना होगा? एक एक दो 42 माइनस 65. सो ये कितना होगा? 107. सो 50. So
2 of this is 0.5 into 2 मतलब 900 minus 50 650 बटे कितना 13 ओके सो माइनस करेंगे तो 240 टाइम्स 300 बाई कितना होगा 15 इंटू 16 ओके सो ये कितना जाएगा 20 टाइम्स ये जाएगा 15 टाइम्स so 300 all right so this is going to be 143.21 minus x is equal to 767 rather 8.05 okay if this is 7 then 5 चल रहा है भाई तो प्लस था ना 32 and 85.5301914 and this was 767 point so 8 तो आएगा उसके बाद आएगा 358 0.55 0.55 0.55 165 0.5 0.70 30% of 45 135 minus 1/3 of 90 plus x equals 100 35 minus 55 so 55 4/5 of this is 72 72 72 88 plus 7th 7 1 5 6 8 36 minus 4 times 55 that is 180 plus 4 12 so this is going to be 48 and 180 108 48 minus 84 108 24 132 1
4 by 7 times 35 by 16 plus 23 by 14 minus 3 by 2 plus what the fuck by 24 6 13 4 5 by 4 plus 23 by 14 minus 3 by 2 plus 13 by 6. The ratio would be 84. 21 times 105 plus this is coming to be 1 point something. This is also 1 point something minus 1 point something 2 point something. So 3 point something. This has to be the answer or none of these. Yes. Twenty-seven, 34, 25 times 7 equal to x minus 47. Plus 47. So 40 आ गया तो कितना कैलकुलेटिव है ये पेपर मैं नहीं कर रहा ओके सो 100 109 so 200 200 and something होगा so एक 109 110 111 the EF rectangle forms a where so, so 14 times 2 is 28 and this is 16 so 28 and 16 so total is 44 times 2 88 so 154 times 4 that is 616 and we are in the A and B income 9 11 expenditure 5 7 each of them says the same okay 4 4 4 0 difference between their income 2 2 2 0 A and B can complete a work in 25 days
B starts the work, and after 9 days, A joins him, and the work is completed in 26 days. So A and B together work for 17 days. So the rest of the work was to be done within 3 and 5, 8 days, but he took 9 days. So it's going to be just more than this, not this, not this, not this. 25. ओके ओके, ये तो होगा नहीं, ये 40 के आसपास है, ये 30 से कम में हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या क्वेश्चन करते हैं ये लोग। सेलर so in present they are 4:1 in present, 5 years 3, so 10 years. ये कैसा सवाल चल रहा है ये। Three, 6, 12, 24, 51. So 11, this is 22, then 33, then 44 would be 122, 13, 15, 17, 19, yeah. 36, 49, फिर होगा 64, 3, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 3, 5. So then 1, 27, 1, 3, actually this is 37, 137, then it is 7, G, 149,
2 into 2 plus 3 into 3 plus 4 into 4 plus 5 into 5. So we'll end with a 5 plus 5 means this 5 3 45 8. So the maximum and minimum number of th. So 30% means okay और I भी है इधर. This is 150. 25% means 1/4. 50. 30% is 120. 40% is 80. Maximum and minimum would be 100. Ratio of TH and TOI in so 70% this and R. So 70% of together. So it has to be 12's multiple, 42's multiple. That is this one. Q and R, the total number of percent. In all the office. So 20 average, okay. 80, 200, 200, 200, 400, 100. Shit. Downstream is 10 kilometer more than in upstream. So 5, 5, 5 here and 5 here. So this will be 12. This will be 4. 4 and 12, 16. All right. There is enough time. 16. 50%. अब तो नहीं होगा. अब तो होगा नहीं. 8 people sitting in a circular table facing center. All right. Center 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. K is sitting second to the left of L. L 1, 2, K. P is sitting immediate right of M. P is sitting immediate left of M. N is not an immediate neighbor of P. N is not an immediate neighbor of P. P nor O. Or wash person. All right. 3% sit between K and N. 1, 2, 3. K and N. So P here. Immediate left of N. All right. R is not an immediate neighbor of L. R is not an immediate neighbor of L. So R can be here or here. All right. All right. All right. O cannot be in these two positions. So if R is not here, then I will give R here, and P is sitting immediate left of M. M sitting. P is sitting immediate left of M. P. And O. Okay. P. Q. What is the position of O with respect to T in anti-clockwise? So third to the third to the right of P. Huh?
Which person is immediate right of K? O. Opposite of P. L. Many persons are sitting between K and N? K and N 3. How many people are sitting between K and the person who is immediate left of K? Between N and immediate left of K when counted from right of N. So 2. Between person sitting between immediate left of K. All laptops are computers. Some computers are mouse. All mouse, laptop, all computers are laptop. Trucks, vehicle, vehicle, car. Some cars, truck, all truck, car. So both. No chair, table, table, sofa, all sofa, no sofa, chair. So all sofa chair, no sofa chair. Okay. Only a few volumes display. Only a few screens or volumes. Some screens are definitely not display. Some screen are definitely not display. ऐसी तो कोई बात नहीं है. All display being screen is a possibility. So option number 2. Okay, 8th floor. Living in 4 floors such that okay. 2 is east of 1. So 1 2 ऐसे है और 4 3 2 1 ऐसे. K lives to the west of R. K lives to the west of R. U lives to the east of C. U lives to the east of C. R lives above L. Only one floor gap between R and L. So R, one gap L. And lives on the same flat number, alright. Same flat. Only one floor gap between C and J. One floor gap between C and J. Same flat. C one floor J slash J one floor C. J lives on one of the floors below N. Both lives on the same flat number. J lives on one of the floors below N. Live at the top floor. U does not live at the top floor. So, एक और. So CU और CU. हालांकि यहाँ से कुछ कनेक्शन मिलेगा क्या मुझे? कनेक्शन जो है कि C और J के बीच में एक है. So C और J के बीच में एक. ये गलत लिख लिया मैंने. C और J के बीच में एक बंदा है. A नहीं होगा, N इसके ऊपर आएगा बोले हैं. और इस पिक्चर को अगर मैं करूँ अभी तो K ऐसे हो जाएगा. L नीचे रहेगा ना R के, तो ये तो नहीं दे पाएगा मुझे. सो इधर कोशिश करता हूँ K और R. फिर इधर एक गैप में L और क्या है N के नीचे J. सो N के नीचे J. और एक कंडीशन क्या है, कुछ है क्या और कंडीशन नहीं दिया है ना. सो एक जो आदमी है वो A है.
अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन्स हैव प्लेस्ड अबव n, so 2. Who lives on flat 2, floor 3, u. Who lives on the floor just above u, r. North east, r. N lives on which of the following floor and flat? First flat, second floor. इसको बाद में करेंगे, बहुत सारे हैं लेकिन करेंगे बाद में ही इसको तो बाद में ही करेंगे। ऑलराइट, सो पार्टी कार का पूछा है, पार्टी का आ जाएगा क्या? इधर पार्टी कार दोनों में कॉमन है ना। ओके, सो एस यू एंड एफ ए, एस यू एफ ए, एस यू एफ ए, योर 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 योर, बस यही पे है। सो टी वाई पहले था, एच एन, जी डी पहले था ना, जी डी, सो एच एन। सन बोट, सन, बस यहाँ पे एक्स सी नहीं, एफ ए नहीं, एक्स बी नहीं, ई के, मतलब ई के तो आएगा ही आएगा। बोट, बोट यहाँ और यहाँ, सो टी वाई, ई के टी वाई, कोड ऑफ टी आर, पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर यहाँ पे है और बस यहीं पे है, सो दैट वुड बी द कोड फॉर आर। आर के लिए कोड है, इधर है ही नहीं आर, तो एक और बार देखता हूँ, पी आर, पी आर बस यहाँ पे है। रन नीचे है, फास्ट नीचे है, कार ऊपर है, पार्टी ऊपर है, सो पी आर का कोड आर के लिए आया है, इसको स्किप करेंगे। रन फर्स्ट, सो रन फर्स्ट, इधर है कोड रन फर्स्ट का, जे भी तो नहीं होगा, जी एन, यहाँ जी डी यहाँ पे है, एच एन नहीं है, एक्स बी एंड जी डी हो सकता है, एच एन फिर से नहीं है, सो एक्स बी जी डी, एक्स बी यहाँ पे, जी डी यहाँ पे, लेकिन एक्स बी जी डी पे नहीं है, ठीक है। Right. 8 people, all right, so Jan, Feb, March, April, May, June, July, August, January, February, March, April नहीं, May, June नहीं, July, August, इसमें तो कम है, इसमें है 30 और 30, बस 30 days, सो ए यह तो इस मंथ या फिर इस मंथ ट्रेवल करेगा। द नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग बिफोर ई एंड आफ्टर एफ इज सेम, ऑल राइट, ओनली 3 will travel in the month on which G travel. Only 3 people travel. All right. 4 people traveled between 4 people traveled between D and H. H traveled on a month. 31. So 31. But not before D. So D के बाद ही आएगा, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। E is traveling immediately after C. Is traveling immediately after
सी। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे ई सी, फिर डी यहाँ पे दूटा, 1 2 3 4 हो जाएगा सेटिस्फाई। बी ट्रेवल्स बिफोर जी, बी ट्रेवल्स बिफोर जी। मैं जो सोच रहा था कि सी को यहाँ पे दे देता हूँ और फिर ई यहाँ पे आ जाएगा, फिर मैं बोलूंगा कि ई के ऊपर एक, एफ के नीचे एक। ऑलराइट, ओके बी ऊपर है ना जी के, सो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे देखूँ तो ये और ये, फिर फिर एफ यहाँ और डी यहाँ, 1 2 3, नो नो, डी यहाँ 1 2 3 4, एच और बी जी के ऊपर। हु इज ट्रेवलिंग इन जनवरी, जनवरी में सी ट्रेवल कर रहा है। लास्ट पर्सन एच है ट्रेवल करने वाला। बी के पहले ट्रेवल किए 3 लोग। ए कौन से महीने ट्रेवल कर रहा है, जुलाई में, नहीं जून में, ए जून में। ट्रू, जनवरी ए नहीं, जुलाई डी नहीं, अप्रैल बी, हाँ। नोबिता शिनचैन, ओके। पिकाचू, ऑल राइट, तो सभी के सभी है इधर। दैट ईस्ट ऑफ नोबिता, सो नोबिता के 10 मीटर ईस्ट है पिकाचू। शिजुका 10 मीटर नॉर्थ है पिकाचू से। शिजुका, शिनचैन 10 मीटर वेस्ट है शिजुका से। ये है कौन, ये शिजुका, नहीं शिनचैन ही है। वेस्ट ऑफ, नोबिता शिनचैन, सो साउथ वेस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शिनचैन और डोरेमोन का, शिनचैन और डोरेमोन ये 100 और 50, 150। तो 5√6 होगा ना, अगर 125, ऑल राइट ऑल राइट, 125 तो हाँ 5√5। एक सेकेंड, 125 यानी कि 25 × 5, सही है। पिकाचू विथ रिस्पेक्ट टू शिजुका, शिजुका के रिस्पेक्ट में पिकाचू, ये भी साउथ वेस्ट। How many consonants in the given arrangement are immediately preceded by a consonant and followed by a symbol? So symbol के आगे पहले 2 consonant नहीं है, एक नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस एक। In how many numbers there are
numbers which are immediately preceded by an alphabet but not immediately followed by an alphabet, so alphabet नहीं होगा, so बस ये वाला अरेंजमेंट मुझे चाहिए, अल्फाबेट और नंबर, अल्फाबेट नंबर नहीं है, नहीं अल्फाबेट नंबर नहीं है, अल्फाबेट नंबर ओके एक मिल गया, अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट है नहीं, करूँ अल्फाबेट नंबर और अल्फाबेट नंबर नहीं, अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट होगा फिर से, अल्फाबेट नंबर ऑलराइट, सो 3 मिले, if all the numbers given are dropped then which of the following will be ninth from the right end, so the numbers have dropped ninth end, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9, which of the following is 17th from the left end of the 7th from the right end, 7th 17th from the right end, so 24th from the right end, 4 4 8 and 4 12 16 20 4, which of the following is 11th from the left end of the 25th from the left end, so 14th from the left end, so 3 3 6 3 9 3 12 2 14k, लिखने में ही टाइम चला जाएगा, सो 2 3 4 2 मिल गए, 1 2 3 4 5 मिल गया, फिर 3 तो हो गया इधर ही, 5 से 7 हो गया, तो मैथ्स में तो बहुत ही गंदा हुआ था, मतलब देखते हैं रीजनिंग में कौन सा चला गया, ओके लास्ट पर्सन टू ट्रेवल, इसको क्या किया था हमने, ये तो आया था ना, नहीं आ रहा, और ऑल राइट, शायद मैंने डी और एच ना गलत लिख लिया था, एच ट्रेवलिंग अ मंथ, बट बिफोर डी बोला था मैंने, आफ्टर डी कर दिया था वो कंडीशन, अच्छा हुआ कि एक ही गलत हुआ है, बाकी ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है तो पढ़ने में ही तो 1 मिनट चला जाएगा, इंटरचेंज करके फिर असेंडिंग ऑर्डर में सजाना था, फिर चेक करना था, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग था, ये भी था लेकिन हो ही गया था, लगभग 4 या 5 ही तो आ गए थे मेरे, यहाँ पर तो सही तो गया लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग था शुरुआत में, और जो क्वेश्चंस करने थे शायद उनको मैंने स्किप कर दिया था, राइट
ओके 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 ओके। सो ये 9 दिन में करता है जो उतने 8 दिन में कर देता, तो उससे रेशियो आ जाता। सही बात है, लगभग हो ही गया था फिर तो। आखिर में मिस हो गया। इंग्लिश का देख लेते हैं। ड्रेंच्ड मतलब भीगा हुआ। ओके। रेस्क्यू मिशन ऑफ देयर रेस्क्यू मिशन। तर यहाँ पे देयर कैसे हो सकता है? एज ऑफ हर और हिज रेस्क्यू मिशन, मतलब पता नहीं यार। तो बिकॉज ऑफ अ मेजर ब्रेक थ्रू। सो ब्रेक थ्रू मेजर ही होता है। अच्छा, अच्छी बात है। बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि चेंज देयर पर्सपेक्टिव, तो पर्सपेक्टिव तो तभी चेंज होगा ना जब कंसर्न ट्रांसफॉर्म होगा, कुछ ट्रांसफॉर्म इनटू एक्साइटमेंट। सो यहाँ पे तो फिर होना चाहिए मैसेज। ठीक है, कोई बात नहीं। सो ए ही तो था, फिडेलिटी। और बी के साथ डी होता, some intrepid individuals were still to make the journey. Still, fidelity का मतलब faithfulness, interpret का मतलब fearless, contemplate, look through for a long time and look thoughtfully. All right. ओके, तो ये वाला तो मुझे पता नहीं कितना था कट ऑफ, चेक करते हो एक बार। ऑल राइट, सो ऑलमोस्ट 82 83 ही रख रहे हैं टेक्स्ट बुक वाले, लेकिन क्वेश्चन तो उतना आसान था नहीं, सही बोलूँ तो मतलब काफी लेंथी था वांट्स का जो सेक्शन था। बाकी तो डुएबल था, लेकिन काफी लेंथी था यही। तो अभी के लिए